सर एक बार हेडिंग रिपीट कर दो। Effect of potential. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर बोर्ड थोड़ा ब्लर आ रहा है आज। हाँ जी सर, बोर्ड ब्लर था। एक ग्राफ बनाना है, मतलब 2-3 ग्राफ ही बनाने हैं, बाकी तो मेरे को डिक्टेट ही करना है। You can draw this diagram. So you can write the effect of potential as shown in the figure. If frequency of all the incident beams is kept same, if frequency of all the incident beams is kept same, but Sir, incident beam. is kept same, but intensity is varied, then it was found that photoelectric current increases with increase in accelerating photoelectric current increases with increase in accelerating potential and the stage is reached the photoelectric current reaches its saturation value सर एक बार रिपीट कर दो। एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, the stage is reached where photoelectric current सर एक बार रिपीट कर दो, सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ब्लर सी आ रही है। कहाँ तक लिखा आपने? एंड इट वेरीज विद। यार ऐसे नहीं पता चलता। रिकॉर्डिंग में सुने ना मैंने, क्योंकि रट्टा नहीं मारा होता ना, बीच में कहीं पे छूट जाएगा तो फ्लो भी सारा ब्रेक हो जाएगा। क्या लिखा था अभी? लास्ट लाइन क्या लिखी है? When photoelectric current reaches its maximum value. Saturation value and So accelerating potential and a stage is reached where photoelectric current के आगे क्या था? reaches its saturation value and does not increase with increase in accelerating potential. For a given frequency, larger the intensity of incident photon beam, larger the intensity of incident photon beam,
larger will be the saturation value of photoelectric current. ब्रैकेट में लिख लो at saturation value. Then At saturation larger value, will be larger will be the photoelectric current. ब्रैकेट में लिखो at saturation value, all the electrons emitted by plate C will reach the plate A. Next paragraph में लिखो. If negative potential is applied on plate A, if negative potential is applied on plate A relative to C, relative to plate C, then motion of electrons will be retarded and photoelectric current begins to decrease. This negative potential is called retarding potential. And the value of retarding potential at which photoelectric current reduces to zero is called stopping potential. Sir, retarding potential की बात क्या कहा? The value of retarding potential at which photoelectric current reduces to zero is called stopping potential. Next paragraph में लिखो फिर. When photoelectric current reduces to zero, the kinetic energy of fastest moving electron gets converted to electrostatic potential energy. Gets converted to electrostatic potential energy. This is accelerating potential. इस रीजन में this is retarding potential. So हम शो कर रहे हैं कि kinetic energy gets converted to electrostatic potential energy. Next paragraph में लिखो if frequency of all radiations is same. If frequency of all radiations is same,
then maximum kinetic energy. Then maximum kinetic energy for all photon beams will be same. Maximum kinetic energy corresponding to all photon beams. Maximum kinetic energy corresponding to all photon beams is same. Therefore, stopping potential is also same. सर corresponding to all के बाद क्या बोला था? All photon beams is same. The stopping potential is also same. अगर मैं इसके ऑपोजिट ग्राफ बनाऊं, frequency different, but same intensity. Intensity same है तो saturation value of current same आएगी. Frequency different है तो maximum kinetic energy different होगी. सबसे ज्यादा कौन सी बीम के लिए होगी? Neutral. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी न्यू3 के लिए सबसे ज्यादा आएगी. तो तीनों बीम्स के लिए करंट सेम, सैचुरेशन करंट की सेम वैल्यू बिकॉज इंटेंसिटी सेम है. बट इसके बाद तीन अलग अलग ग्राफ. सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए? New one. Beam, second beam and third beam. So VS1, VS2 and VS3. So stopping potential different आएगी but saturation current same आएगी. समझ में आ रहा है ग्राफ कि इंटेंसिटी सेम है तो saturation value of current सेम होगी, बट रिटार्डिंग पोटेंशियल कोई काइनेटिक एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होगी तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी सबसे ज्यादा आएगा. सो ग्राफ बना लो, फिर लिखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में लिख लो फॉर सेम इंटेंसिटी. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर सेम इंटेंसिटी. हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी से क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी से क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते? Why we need a particle theory? क्योंकि wave theory में energy is directly proportional to intensity और यहाँ पे energy is directly proportional to frequency. Wave theory में energy is directly proportional to, मतलब उसमें भी फॉर्मूला वेव में भी आपने यही लिखा था E is equal to h nu. आइंस्टाइन ने पार्टिकल थ्योरी में भी यही दिया E is equal to h nu. Instantaneous. Instantaneous because वेव में होता है कि एनर्जी स्प्रेड इन अ रीजन, कि ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को जाके एनर्जी देगी. वेव थ्योरी में था एनर्जी स्प्रेड इन अ गिवन रीजन. तो उसमें ये था कि अगर आपके पास मिनिमम एनर्जी नहीं भी है, जब फोटोन बीम स्ट्राइक करेगी, सॉरी वेव स्ट्राइक करेगी, जब वेव स्ट्राइक करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे एनर्जी एक्युमुलेट करते जाएंगे जो उनको मिल रही है, और जब उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी तो एमिट हो जाएंगे. मतलब उसमें ये नहीं था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए कि एटलीस्ट उतनी फ्रीक्वेंसी होगी तभी एमिशन होगी. वेव थ्योरी के हिसाब से आप कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लो, एमिशन हो जानी चाहिए थी, सिर्फ टाइम ज्यादा लग सकता है कि धीरे धीरे एनर्जी एक्युमुलेट की. सो वेव थ्योरी के हिसाब से इसीलिए इंस्टेंटेनियस फिनोमेना नहीं हो सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल टेक टाइम व्हेन दे कीप ऑन एक्वायरिंग एनर्जी, और जब उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाएगी वो एमिट करेंगे. सो इसलिए पार्टिकल थ्योरी लानी पड़ी सो दैट इंस्टेंटेनियस इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड. एंड वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट कि फोटोन सारी एनर्जी एक ही पार्टिकल को देगा, वो स्प्रेड नहीं करेगा अपनी एनर्जी. सो इसको लिख लो पहले. सर आपने ये नीचे के लिखा है VS, ये बड़ा सा नहीं जा रहा थोड़ा सा. VS1, VS2, VS3. So we can write
if three photon beams have same intensity but different frequency, have same frequency but different intensity, एक बार कोई sorry, लाइन same intensity but different frequency, same intensity but different frequency, then स्टार्टिंग इसी हुआ था. हाँ starting यहीं से किया है. If we have three photon beams with same intensity but different frequencies, then saturation value of photoelectric current will be same in all the three cases. Saturation value of photoelectric current will be same in all the three cases, but larger the frequency of incident photon beam, larger will be the larger will be the maximum kinetic energy with which electrons are emitted. Therefore, stopping potential So larger will be the maximum kinetic energy. with which electrons are emitted. Thus, stopping potential will be different for three beams. If nu3 is greater than nu2 greater than nu1, then Vs3 should be greater than Vs2 should be greater than Vs1. सर एक बार रिपीट कर दूं फॉर ऑल बीम μs1. If nu3 greater than nu2 greater than nu1, then Vs3 greater than Vs2 greater than Vs1. Mathematically, for nu greater than threshold frequency, stopping potential is directly proportional to the frequency of incident photon beam. Stopping potential is directly proportional to सर आपने स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके बाद क्या बोला था. frequency of incident photon beam. Next to write. Laws of photoelectric emission. Laws of photoelectric emission. You can read first law. First law. For a given
photosensitive material for a given photosensitive material and frequency. मतलब अगर वर्क फंक्शन सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है तो photoelectric current will be directly proportional to intensity for a given photosensitive material and frequency of incident radiation. ब्रैकेट में लिख लो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट. Same frequency of For a given photosensitive material and frequency of incident radiation, bracket में nu greater than nu naught, the photoelectric current is directly proportional to intensity of photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiations. Second is for a given photosensitive material. Second is for a given photosensitive material, there exists a certain minimum frequency called threshold frequency below which no photoelectrons are emitted however high the intensity of radiations may be. However high the intensity of radiations may be. however high The intensity of radiations may be. Third is above threshold frequency, the maximum kinetic energy of emitted electrons. Above threshold frequency, maximum kinetic energy of emitted electrons is directly proportional to frequency of incident radiations but is independent of the intensity of radiations, but is independent of the kinetic energy of the incident electron emitted electron is directly proportional to किसके proportional होगी आप बताओ मेरे को. frequency. तो फिर मेरे से क्या पूछ रहे हो यार, ये चीजें तो कंप्लीट कर लो ना, सारा कंसेप्ट समझा दिया. Directly proportional to frequency and independent of intensity of radiation. Next, photoelectric emission is an instantaneous phenomena. Fourth, photoelectric emission is an instantaneous phenomena. The time lag between photons striking the metal surface and emission of electrons time lag between photon striking the metal surface and emission of electrons is only
Yeah, is less than 10 raised to power minus 9 seconds. Is less than 10 raised to power minus 9 seconds. Is less than 10 raised to power minus 9 seconds. तो इसकी यूनिट क्या दें? इसके 10 raised to minus 9. टाइम लैग की यूनिट क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? टाइम की यूनिट नहीं पता क्या होते हैं? 10 raised to power minus 9 seconds. सर एक्चुअली वॉइस आपकी वॉइस में डिस्टर्बेंस की आ रही है, क्लियर नहीं आ रही थोड़ी वॉइस. वो नेट का इशू होगा. ऑफलाइन क्लासेस लगानी शुरू कर दो, अब तो केसेस भी नहीं है. सारे झंझट ही खत्म हो जाएंगे ये वाले. वॉइस का क्लियर है होगा. वैसे वॉइस. सर कब से शुरू हो रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस? मैं तो कल से भी कर सकता हूँ. आप आने वाले बनो. हाँ जी सर. अभी वैसे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, वॉइस की, वीडियो की. और मेरे को पता भी चलेगा आप कुछ पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते. सर कर लो. कितने लोग आने को तैयार हैं? चलो यही बताओ पहले, कितने लोग ऑनलाइन में, ऑफलाइन में सॉरी. अल्लाह, अब सारे चुप हो गए. सर एक बार टाइमिंग बता दो. टाइमिंग्स तो मैं ये वाली भी रख सकता हूँ, 7:30 से 8:30. ये वाले भी रख सकता हूँ, मॉर्निंग का भी दे सकता हूँ 6 to 7. मॉर्निंग के रख लो. और 2:45 से 3:45 जो रेगुलर +2 का टाइम होता था. Second rate in American. Work function of metal X. Work function of metal X is 3.5 electron volt. And work function of metal Y is equal to ionization energy of helium positive ion in first excited state. Helium positive ion in first excited state. The maximum kinetic energy of electrons emitted from X. The maximum kinetic energy
of electrons emitted from X is twice that of photoelectrons emitted from Y. Find wavelength of incident light. Find wavelength of incident light. हमें दिए x का वर्क फंक्शन 3.5 है, y का वर्क फंक्शन है which is same as ionization energy of helium positive ion. फिर हमें कहा maximum kinetic energy of x is double that of the kinetic energy of y. तो हमने बताना है कि वैल्यू कितनी है इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ की. कैसे करें? Basically maximum kinetic energy of emitted electrons. Emax. H2 minus work function हमें दिया है for x. And for y अगर x के लिए एनर्जी 2 ही है तो y के लिए e है. y के लिए वर्क फंक्शन कितना दिया है? y के लिए वर्क फंक्शन कितना दिया है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं पता आपको? -2.18 into 10 raised to -18. कन्वर्जन करते रहो बैठ गया. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ. आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला पढ़ा है. आपको मैंने बोला था केमिस्ट्री पढ़ लेना. मैंने केमिस्ट्री की बुक पढ़ ली आपकी उठा के. उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया है. रीडिंग 0.6. इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं. कितना आएगा सॉल्व करके? 27.2 minus 3.5. और इसको चेंज कर दो जूल्स में. ये सॉल्व करना है. दिस विल बी द आंसर. आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला बताना मेरे को क्या होता है. 13.6 into z square n square. ये रटा होना चाहिए सबको. तो सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आएगा. नेक्स्ट.
अच्छा एक ये कंसेप्चुअल है, वैसे आंसर बता देना. Find the change in energy of a photon of blue light, lambda 4000 angstrom, when it enters water. What will be change in energy of photon of blue light, lambda is equal to 4000 angstrom when it enters water? Mu is given as 4/3. No change. न्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. No change, because energy depends on frequency and frequency will not change with change in medium. Because water के अंदर velocity भी mu times कम हो जाएगी, lambda भी mu times कम हो जाएगा, इसलिए energy unchanged रहेगी. So next you can write a 0.6 milliwatt laser. 0.6 milliwatt laser is aimed at the moon. Is aimed at the moon. The wavelength of emitted light is 600 nanometer. And the divergence angle for laser is Sec 0. And wavelength of emitted light is 600 nanometer. And the divergence angle for laser is 0.5 milliradian. Earth-moon distance is nearly 4 into 10 raised to power 8 meter. Calculate. Earth-moon distance is 4 into 10 raised to power 8 meter. Calculate the maximum number of photons arriving per second per square meter on the moon. Per second per square meter on the moon. क्वेश्चन समझ में आया? So the wavelength of emitted के आगे क्या था? 600 nanometer. So Wavelength of and divergence angle is 0.5 milliradian. so वो emitted electrons है या मतलब light क्या था? या लेजर में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. अच्छा light था, ठीक है. कैसे करें? कैसे करें इसको सॉल्व? अर्थ से मून की तरफ लेजर गई है. लेजर की पावर गिवन है हमारे को. वेवलेंथ ऑफ emitted electrons given, emitted photons given है 600 नैनोमीटर. हमने बताना है मून के सरफेस पे पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कितने फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं.
अगर मैं आपसे पूछूं लेजर ने कितने फोटॉन्स एमिट किए पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन बीम, n/t किसके इक्वल आ जाएगा? यही आएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। पावर कितनी दी है? 0.6 millivolt. This is the number of photons emitted per unit time. डाइवर्जेंस एंगल का क्या करें? हमें ये एंगल दिया है मिली रेडियन, ये डिस्टेंस दिया है रफली, डायमीटर कितना हो जाएगा? बिकॉज सर्कुलर पैच में जाएगी, बिकॉज 3D फिगर बनेगी, तो इसका डायमीटर कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू d by r. r is this, r is 4 into 10 raised to power 8. Theta is 0.5 milliradian. एरिया इन विच फोटॉन स्प्रेड, कितने एरिया में स्प्रेड कर गए फोटॉन्स? ये एरिया कितना होगा? Pi d square by 4. Number of photons per second per unit area on moon. इसको सॉल्व कर दो जो भी आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड तो उतने ही होंगे जितने लेजर ने एमिट किए, सो एरिया से डिवाइड करना है बिकॉज वो एरिया में स्प्रेड हो गए हैं. सो p lambda by hc over a is pi d square by 4, तो 4 p lambda by hc into pi d square. कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेना, आंसर यू विल गेट इज 5.7 into 10 raised to power 4 per meter square per second. 5.7 into 10 raised to power 4 meter minus 2 second minus 1. Repeat answer. 5.7 into 10 raised to power 4. इसमें डाइवर्जेंस का नहीं मतलब क्लियर हो रहा है. कौन सी कन्वर्जन? सर डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस तो एंगुलर स्प्रेड को बोलते हैं ना. तो एंगल दिया है कि वो कितने रीजन में स्प्रेड कर रही है, तो एंगुलर स्प्रेड दिया लेजर बीम का, ओके. बिकॉज वो ऐसे सिंगल स्ट्रेट लाइन तो नहीं जाएगी, स्प्रेड करेगी.
और ये एंगल तो मैंने बहुत बड़ा शो किया है डायग्राम के लिए. 0.5 मिली रेडियन इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल. तो आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको थ्रेड की तरह ही नजर आएगा अभी भी. सर डाइवर्जेंस मतलब जो डिफ्रैक्शन हुई है, डाइवर्जेंस मतलब जो डिफ्रैक्शन हुई है लाइट की. लाइट कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती ना, स्प्रेड तो करती है. आप रूम में ट्यूबलाइट जलाते हो तो स्ट्रेट थोड़ी जाती है. ये तो लेजर की प्रॉपर्टी है कि लेजर इज यूनिडायरेक्शनल, स्प्रेड नहीं करती. बट उसका भी कुछ डाइवर्जेंस एंगल तो होगा ना. उसकी थिकनेस जीरो तो नहीं ले सकते लेजर बीम की. जैसे जैसे आपसे दूर जाती जाएगी उसका रेडियस बीम का बढ़ता जाएगा, तो वहां से डाइवर्जेंस एंगल निकलता है. ओके सर. नेक्स्ट. Light photon of wavelength lambda naught. A light photon of wavelength lambda naught is absorbed by an atom of mass m in ground state. By an atom of mass m in ground state. The atom is free to move. The atom is free to move. The atom, after absorbing the incident photon, emits another photon in direction opposite to the incident photon. Absorbing the emitting electrons. The atom, after absorbing the incident photon, emits another photon in direction opposite to that of incident photon and returns back to ground state. In the process, atom acquires kinetic energy K. Find lambda naught in terms of. Find lambda naught in terms of. Find lambda naught in terms of K and M. करो solve. सर क्या था इसके अंदर? First and second को add कर दो, you will get the answer.
सिंपल इक्वेशन लगाई है मैंने एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो आपने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, h बाय लैम्डा। देखो आ रहा है समझ कैसे किया है? बिकॉज हमें दिया था इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब मोमेंटम ऑफ फोटोन इज ऑपोजिट डायरेक्शन में एमिट किया, तो उसका मोमेंटम माइनस h बाय लैम्डा 1 प्लस दिस इज मोमेंटम ऑफ एटम। फिर एनर्जी कंजर्वेशन hc बाय लैम्डा नॉट इज hc बाय लैम्डा 1 प्लस k। नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके। और कल टेस्ट है आपका, थर्सडे को डाला था बट कल है।